Hey dear learners, welcome to the Fluent Speaker and today we are going to learn about the preposition. It is gonna be a first part of the preposition जहाँ पे हम देखेंगे definition क्या होती है preposition की और preposition का मतलब क्या होता है। और याद रखिएगा preposition का पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। If you wanna be a speaker, जब आप स्पीकर बनते हो आप अच्छे प्रवक्ता बोल सकते हो कि जब आप एक अच्छे बोलने वाले व्यक्ति बनते हो जो इंग्लिश में बोलते हैं आप अगर आपको अगर बनना है तो डेफिनेटली प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पीकिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं मिस्टेक्स भी करते हैं और ये आपके अपने जो आपके एग्जाम्स होते हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए या फिर दूसरे एग्जाम हो गए। बेसिकली अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस आर मच इंपॉर्टेंट राइट। सो सम ऑफ द प्रीपोजिशन वी आर गोना डिस्कस ओवर हियर टू राइट टू फॉर ऑन ऑफ फ्रॉम। सो ये सारे हमारे क्या होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं। टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है ये सारी चीजें हम क्या करेंगे सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन, यहाँ पे कुछ सेंटेंस के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने प्रीपोजिशन को। फर्स्ट लुक, आई वांट परचेज न्यू क्लॉथ्स माय एंटायर फैमिली द कमिंग संडे। इज इट द करेक्ट सेंटेंस? नो, it is group of the words, right? It is group of the words, not a proper sentence. जैसे हम बात करें I want to purchase new clothes, it's a group of words. My entire family coming Sunday, right? It's group of words. हम बोल सकते हैं I want to purchase, right? I want to purchase new clothes, it's a group of words. My entire family, it's group of words. Or coming Sunday, it's group of words. So here, the above sentence means above is a group of few words that do not form a proper sentence और ये एक proper sentence को form नहीं करता है. How it can be a proper sentence? I want to purchase new clothes. I want to purchase new clothes, clothes for my entire family. For my entire family on coming Sunday. Right? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आई वांट टू परचेज न्यू क्लॉथ फॉर माय एंटायर फैमिली ऑन द कमिंग संडे, मैं अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदना चाहता हूँ पूरी फैमिली के लिए जो कि संडे आ रहा है राइट। दिस इज द करेक्ट वन। फॉर एग्जांपल द अबव सेंटेंस इज अ प्रॉपर सेंटेंस सिंस द अंडरलाइंड वर्ड्स आर एडेड। इफ वी से टू, इट इज व्हाट? इट इज प्रीपोजिशन। टू इज व्हाट? टू इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इफ वी से फोर इज व्हाट? इट इज preposition. On is what? It's preposition. So where we have to use these preposition? हमारे को ये सारी preposition कहाँ पर यूज करनी है? For example, I want purchase, right? I want to purchase. मैं खरीदना चाहता हूँ, right? I want to purchase new clothes for my family. किसके लिए खरीदना चाहते हो? Right? For my family on the coming Sunday. हम जब डेट के बारे में बात करेंगे, तारीख के बारे में बात करेंगे, वीक के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी हमारा प्रीपोजिशन लगता है। इसीलिए हम बात करें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न अबाउट द प्रीपोजिशन। लेट्स स्टार्ट फॉर द डेफिनेशन। इज द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन। प्रीपोजिशन क्या है? जिसके अंदर नाउन आते हैं। नाउन इज व्हाट? नेम, राइट? किसी भी चीज का नाम हो सकता है। pronoun, adjectives, verbs and phrases to other words in a sentence to form a proper sentence. अगर हम बात करें भाई डेफिनेशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फ्रेज और या फिर हम दूसरे वर्ड्स के बारे में बात करें जो कि क्या करता है उसको लिंक करता है। लिंक मतलब जोड़ना। आई एम गोइंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग स्कूल। इज इट राइट सेंटेंस? No, it is not right sentence. School is what? It is noun. It is noun, right? I is what? It is pronoun. It is pronoun. Here, where we are going? We are going school. To school. Where we are going? We are going to school. Here we are what? We are linking noun, right? We are linking noun. Whatever it could be. It could be pronoun, like whatever it could be. मैं घर जा रहा हूँ या फिर मैं घर से आ रहा हूं। आई एम कमिंग होम, नो आई एम कमिंग फ्रॉम होम, राइट? फ्रॉम इज व्हाट? इट इज प्रीपोजिशन। जस्ट रिमेंबर फॉर एग्जांपल माय शर्ट इज इन द शेल। माय शर्ट इज द शेल। सेंटेंस नहीं होगा, ये क्या होगा? ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। तो इफ यू आर यूजिंग इन देन व्हाट इट इज डूइंग? इट इज मेकिंग अ प्रॉपर सेंटेंस गाइस। It is making a proper sentence. The dog is on the table, right? Where is the dog?
Dog is on the table, right? Where is dog? Dog is on the table. We use wooden cloths during the winter, right? We use wooden cloths during the winter. Here we can say when we are using during the winter. The workers take a rest beneath the tree. The workers take a rest beneath the tree. जो workers हैं कहाँ पर rest करते हैं? पेड़ के नीचे, है ना? पेड़ की छाव में. You can say, please spread the cloths over the table, right? जो कपड़े हैं वो क्या करो? टेबल के ऊपर फैला दो. Over the table. I am fond of sweat. Bring a chain from the room. So here from, right? Off. So these are what? These are preposition, right? These are preposition, and what we have to do? We have to link this preposition to make a right sentence. Hopefully ये आपको clear हो गया होगा कि preposition में actual में होता क्या है, and we are gonna learn this preposition in our next class. First of all, we need to know about the preposition, what is the meaning of preposition, and why should we learn this preposition. Next, preposition fall under three cases. Preposition जो है तीन cases में आते हैं. First, simple preposition in, and, at, by, to, up, of, for, from, till, with, through. This is simple preposition. Compound preposition: above, below, beneath, between, beside, behind, outside, inside, within, without, amidst, about, long. Right? This is common preposition. ठीक है? आगे sorry, compound preposition. Group of words in phrases. If we say, since phrases that function as per preposition are called phrases. एक अगर हम बात करें phrases that function as a preposition, ऐसे phrases जो भी preposition की तरह function करे called phrase preposition. By means of, in favor of, in order to, instead of, in spite of, in place, with reference to, on account of, with regard to. So here we are using these preposition with some words. These we call group of the words called phrases. What we call phrases. So these we are gonna learn in our next video, right? These preposition we are gonna in next video. So do not miss our next video. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. उसमें हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, हर एक वर्ड को समझेंगे, बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा. तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पूरा कंप्लीटली प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे. धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. मीट यू इन नेक्स्ट क्लास.